श्री पुष्पदंत रचित शिव महिम्न द्वारा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री पुष्पदंतोवाच महिम्न अपारन्ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरा अधावाच्य सर्वास्वमति परिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकर अतीतः बन्धानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्व्यावृत्यायं जगिदमविधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्य कतिविधगुणा कस्य विषया पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वच मधुस्फीता वाच परममृतं निर्मितवतस्तव ब्रह्मन् किं वा कपिसुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवता पुनमित्यर्थेऽस्मिन् पुरमदनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदयरक्षा प्रलयकृत् त्रयी वस्तु व्यस्तं तिस्रषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधतयैके जडधिया किमिह किं काय स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वयि अनवसरदुस्थो हतधिय कुतर्कोऽयं काश्चिन्मुखरयति मोहाय जगत अजन्मानो लोका किमवयभवन्तोऽपि जगत मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंसेरत इमे त्रयी साङ्ख्यं योगा पशुपतिमदं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापदजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवैव महोक्ष खट्पाङ्गं परसुरजिनं भस्मफणिना कपालं चेति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं ददति च भवद्भ्रूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्ते वेतस्मिन् पुरमदनतैर्विस्मितैव स्तुवञ्जिर्हृमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरञ्चिर्हरिरथ परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषां ततो भक्ति श्रद्धा वरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्ते ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरभ्यतिकरं दशास्यो यद्बाहू नवृतरणकण्डूपरवशान् शिरः पद्माश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुच्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयत अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खल यदृद्धिं सूत्रां नो वरद परमोच्चैरविशति मदश्चक्रे बाणपरिजनविधेयत्रिभुवन न तच्चित्रं सम्यक् परिवसितरि त्वच्चरणयोर्न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनदि अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीत् यस्त्रिनयन विसंसमृतवद सकल्मास कण्ठे तव न कुरुते न स्त्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनम् असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा सपश्यन्नि स त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मर स्मर्तव्यात्मा नैव शिशुपथ्य परिभवम् महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यद्भुजपरिगरुग्णग्रहगणं मुहूर्द्यौर्द्यौस्त्यं यात्यनिभृतजटा ताडिततटा
जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विबुधां वियद्व्यापीतारा गणगुणितफेनोद्गमरुचि प्रवाहो वाराम्य पृषदलघुद्रष्टा शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमं त्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपो रथक्षोणीयन्ता शतरतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिशर इति दिदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधेर्विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रबुधियम् हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमादाय पदयोर्यदेकोऽनेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकपरिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां स्वकर्म व्रत्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अधस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जना क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपतिरधीशस्तनुभृतां ऋषीणामार्त्विज्यं शरणदसदस्यासुरगणां क्रतुभ्रेशस्त्वत्त क्रतुफलविधानाभ्यजनिनो ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विदुरमविचाराय हि मखा प्रजानाथं नाथ प्रसवमविकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां प्रिरमयिषु मृत्स्यस्य बभुषाम् धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं प्रसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधरवसा स्वलावण्या संसाधृतधनुसमन्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमदनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना दवैति त्वामद्धावदवरदमुग्धा युवतय श्मशाने स्वा क्रीडा स्मरहरपि सा च सहचरास् चिताभस्मालेपास्त्रगपिण्ड्रिकरोटी परिकरम् अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुत प्ररिष्य द्रोमाण प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृश यदा लोक्यालादं हृदयैव निमज्यामृतमये दधात्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहस्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुदरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता विप्रतुगिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं तिस्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा नकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत्तीर्न विकृतिं तुरीयन्ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगृणात्योमिति पदं भव शर्वो रुद्र पशुपतिरथोग्रासः महास्तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् अमुस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवाश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्पोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणति चेता क्लेशवस्यं क्वचेदं क्वचदवगुणसीमोल्लङ्घनी शश्वतृद्धि इति जगिदममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् भरतचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चिता शेन्दमौलिर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठा पुष्पदन्ता विधानो रुचिरमलघुभृत्यैः स्तोत्रमेतच्चकार अहरहर नवद्यं धूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तपुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायो पुत्रवान् कीर्तिमाश्च
महेशान्न परो देवो महिम्नो न परस्तुति अघोरान्न परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परम् दीक्षादानं तवस्तीर्थं ज्ञानं यागादिका क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नारन्ति षोडशीं कुसुमदसन नाम सर्वगन्धर्वराज शिशुशशिधरमौलिर्देवदेवस्य दास सकलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षित् दिव्य दिव्यं महिम्ना सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्य प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैस्तूयमान स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी शिवमीश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदाशिव तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं य पठेन्नर सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्विषारेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेश पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापशम्भव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर प्रसीद शिवशङ्कर गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनम्